Hello dear children, welcome back to Technology series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 7. So children, this is your English reader book, means your literature book, and the name of the book is Language Odyssey, a 21st Century Reader's Guide. So children, today we are back again with the first chapter, and the name of the chapter is The Solitary Reaper. So children, this is a poem. Let's read it. So in this poem, the poet tells us about a girl. So ये जो poem है, ये एक girl की poem है. A Highland lass. उस girl को poet ने Highland lass बोला है. Who is alone in the field? वो field में alone hai. As she is harvesting her crops, she is singing a sad tune which echoes in deep valley. So when she was harvesting means cutting her crops. जब वो अपने crops को cut कर रही थी, what was she doing? She was singing a sad tune. वो एक sad song गा रही थी, which was echoing in the deep valley. The speaker asked us to stop and listen to her tune. So speaker हमसे कहते हैं कि we should stop and listen to her tune और gently pass, या फिर हम वहाँ से निकल जाएं. Let's read the poem. So behold her single in the field, yon solitary highland lass. So here the poet is saying, behold her single in the field. So the girl is alone in the field. वो अकेली है. That's why it's written here single. So behold her, look at her or see at her. Yon solitary highland lass. Solitary means alone. So यहाँ पे girl है जो अकेली है इस पूरे highland में. Reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. So poet is saying again that the girl is reaping means she is cutting the crops and singing by herself. और वो अपने मन में कुछ गाने को गुनगुना रही है. Stop here. या तो यहाँ से जो passers by जो जा रहे हैं, जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, या तो वो यहाँ पे stop हो जाएं, रुक जाएं और सुने कि वो गर्ल क्या गा रही है. और gently pass, या फिर अगर उन्हें नहीं सुनना है, so they can go or they can pass from here without disturbing the girl. So in the first paragraph, the poet is saying that there is a beautiful girl in the field and she is doing her work, and when she is doing her work, she is singing by herself, and if you want to listen what she is saying, then you can stop. And if you don't want to listen, then you can go on or pass. Alone she cuts and binds the grain. So अकेली ही है and she is cutting and binding means cut करने के बाद she is rolling the grains and sings a melancholy strain. और वो एक बहुत ही sad song गा रही है. So melancholy means sad. So she is singing a melancholy strain. Oh, listen, for the vale, the fount is overflowing with the sound. So here the poet is saying कि सुनो, आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा कि in the valley the sound of her singing is everywhere, distributed everywhere. So poet क्या कह रहा है? कि वो जो भी गाना गा रही है उसकी आवाज पूरे वैली जहाँ पे वो रहती है उस पूरे वैली में गूंज रही है. एंड इट इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. और जो पूरा वैली है वो उसके साउंड से ओवरफ्लो कर रहा है. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands.
So here the poet is saying, no nightingale did ever chant. So nightingale की आवाज जो है, nightingale is a bird, उसकी आवाज कही जाती है, बहुत ही स्वीट होती है. और आपको पता होगा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? यस, our beloved Lata Mangeshkar is also known as Nightingale of India. So आपने सुनी होगी लता मंगेशकर की आवाज. So ये कहा जाता है, और उन्हें नाइटिंगेल इसलिए कहा गया क्योंकि नाइटिंगेल एक बर्ड है जिसकी आवाज बहुत ही स्वीट होती है. So यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट. सो उस गर्ल की जो आवाज है वो इतनी सुरीली है, इतनी प्यारी है कि इतना सुंदर तो कभी नाइटिंगेल ने भी नहीं गाया होगा. मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स. सो वो जो भी गा रही है वो नोट्स जो है बहुत ही ऐसे हैं कि वहां पे आसपास गुजरने वाले लोग सब उसमें सुन सकते हैं. और ट्रेवलर्स इन सम शेडिंग हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स. सो यहाँ पे पोएट आगे कह रहे हैं कि उसकी आवाज इतनी सुंदर, इतनी प्यारी है कि जैसे कि ट्रैवलर जो होते हैं वो किसी अरेबियन सैंड में ट्रैवल कर रहे हैं. सपोज करिए कि कुछ ट्रैवलर्स हैं वो अरेबियन सैंड्स में ट्रैवल कर रहे हैं. अब आपको पता होगा कि सैंडी एरिया में आपको शेड नहीं मिलता है, वाटर नहीं मिलता. सो अब आप सपोज करो कि आप एक ट्रैवलर हो और ट्रैवल कर रहे हो आप अरेबियन सैंड्स में, और अचानक से आपको कुछ शेड दिख जाए तो आप क्या करोगे? आपको रिलैक्स फील होगा. सो पोएट इज सेइंग कि उस गर्ल की आवाज सुन के भी लोगों को बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, जैसे कि किसी ट्रैवलर को अगर शेड मिल जाए जब वो किसी अरेबियन सैंड में घूम रहा है, वैसे ही इतनी खुशी मिलेगी आपको उस गर्ल की आवाज सुन के कि आपको वैसा ही शेड महसूस हो. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird. So here now poet is comparing the girl with the cuckoo bird. So poet कह रहे हैं कि a voice so thrilling never was heard. So ऐसी आवाज, ऐसी थ्रिलिंग आवाज मैंने कभी नहीं सुनी. In springtime from the cuckoo bird. कुकू बर्ड जब स्प्रिंग टाइम में गाना गाती है, आपको पता होगा स्प्रिंग का जब मौसम आता है तो हर तरफ ग्रीनरी होती है, फ्लावर्स खिलने लग जाते हैं, पेड़ों पे ग्रीन पत्ते आ जाते हैं. सो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि कुकू बर्ड की भी ऐसी आवाज नहीं होगी जब वो स्प्रिंग को देख के गाना गाती है. उससे भी बेहतर आवाज इस गर्ल की. Breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. So here now the poet is saying कि उस गर्ल की जो आवाज है, it is breaking the silence of the sea. तो जो सी है उसकी जो शांति है उसको भी वो ब्रेक कर रही है, और उससे भी अच्छी उसकी आवाज गूंज रही है. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old happy far off things and battles long ago. Now, children, here the poet is saying, will no one tell me what she sings? क्या मुझे यहाँ पे जो लोग हैं क्या उसमें से कोई बता सकता है? क्या कोई ऐसा नहीं है जो मुझे बता पाए? What she sings, क्या ये लड़की जो गाना गा रही है ये क्या गा रही है? Perhaps the plaintive number flows. So the poet is saying कि लगता है ये बहुत ही कोई सैड सॉन्ग गा रही है, ये अपनी लैंग्वेज में कोई सॉन्ग गा रही है. For old unhappy far off things and battles long ago. अब पोएट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हो सकता है इस गर्ल की जो आवाज है इसमें ये जो सॉन्ग गा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ओल्ड या फिर अनहैप्पी या फिर किसी फार ऑफ थिंग को याद कर रही है और फिर उसके लिए गाना गा रही है. या फिर कोई बैटल है, मीन्स बैटल जब होता है तो क्या होता है, सब जगह जो है सैडनेस फैल जाती है. सो उस बैटल को याद करके भी ये सॉन्ग गा सकते. तो हो सकता है किसी पुरानी ऐसी चीज को याद करके इसने ये गर्ल इतना सैड सॉन्ग गा रही है. Or is it some more humbly familiar matter of today?
some natural sorrow, loss or pain that has been as maybe again. So here the poet is saying, or is it some more humble day, familiar matter to of today. So अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि हो सकता है इस लड़की के साथ पहले ना हुआ हो कुछ, कुछ आज के टाइम में हुआ हो, आज हुआ हो ऐसा, जिसको ये सोच सोच के वो सैड सॉन्ग गा रही है. सम नेचुरल सॉरो, कोई नेचुरल सॉरो हो गई उसके साथ, लॉस या फिर पेन, किसी की डेथ हो गई हो, उसको सोच सोच के ये ऐसा सॉन्ग गा रही है. दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन. सो ऐसी कोई चीज जो हुई हो या फिर होने वाली हो. सो ऐसी चीजों को सुन के हो सकता है ये गर्ल ऐसा सॉन्ग गा रही है. Whatever the theme, the maiden sang, as if her song could have no ending. So here children, the poet is saying, whatever the theme, the maiden sang. So poet is saying कि जो भी theme है इस girl के गाने का, जो भी ये girl, maiden means girl, गा रही है, as if her song could have no ending. ऐसा लग रहा है इसका जो song है उसकी कोई ending नहीं है, ये गाना चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, वो अपने दिल की बात बोलती ही चली जा रही है. I saw her singing at her work and over the sickle bending. So poet is saying कि मैंने उस गर्ल को क्या देखा कि she was singing at her work. वो जब भी काम कर रही थी तो वो सिंग कर रही थी. And over the sickle bending, और जो सिकल है, सिकल क्या होता है, एक तरीके का औजार होता है जिससे हम किसी भी चीज को काटते हैं, घास घास को. इट्स लाइक दिस, ऐसे शेप का होता है. तो वो क्या कर रही है गर्ल, सिकल लेके शी इज बेंडिंग एंड कटिंग द क्रॉप्स. आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल. सो जैसे मैं हिल पे जा रहा था तो मैं जाते जाते एकदम से मोशनलेस हो गया या फिर स्टिल हो गया. द म्यूजिक इन माई हर्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड लोनली. सो मैं वहां से निकल गया था, मैं वहां से आगे बढ़ गया. द म्यूजिक इन माई हर्ट आई बोर, वो म्यूजिक जो उस गर्ल गा रही थी, उस गर्ल का वो म्यूजिक मेरे हर्ट में आके, मेरे दिल में आके बस चुका है. लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, उस रास्ते से आगे गुजर चुका हूँ, और वो गर्ल ना मुझे दिखाई दे रही है ना उसका म्यूजिक सुनाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वो म्यूजिक मेरे दिल में ऐसे बस चुका है कि मेरे दिल से वो बाहर नहीं जा रहा. लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, अभी सुनाई भी नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी वो मैं अपने दिल में उस गाने को गुनगुना सकता हूँ. वो गाना मेरे दिल में बस चुका, वो इतना अच्छा गाना गा रही थी. So children, do you know that solitary word comes from Latin word solus? And who is the poet of this poem? So children, the poet of this poem is William Wordsworth. So he is the poet. Now children, in this chapter we have learned even the lowliest individual and ordinary situations have a beauty. So यहाँ पे एक जनरल सी सिचुएशन थी, एक लड़की जो है क्रॉप्स को रीप कर रही थी, एक सिंपल सी सिचुएशन थी, लेकिन उसमें भी पोएट ने हमारी ब्यूटी ढूंढ दी. सो हियर वी हैव लर्न लोलीएस्ट इंडिविजुअल मीन्स कि वो इंडिविजुअल, वो पर्सन कोई भी हो सकता है. एंड ऑर्डिनरी सिचुएशन, एक नॉर्मल सी सिचुएशन है, इसमें भी पोएट ने ब्यूटी निकाल दी. नेचर आर मेंट टू ट्रिगर इमेजिनेशन. सो नेचर से आप किसी भी तरीके की इमेजिनेशन कर सकते हो. द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स, और नई थिंग्स को हमें ट्राई करते रहना चाहिए. नाउ लेट्स कम टू द बुक एक्सरसाइज. हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रीपर? So obviously William Wordsworth is a poet. Now the poem The Solitary Reaper is based on the theme of nature and common life, nature and supernatural power, space and sky, and romanticism. So nature and common life. Now what was a girl doing in the field? Lonely, wandering, sleeping, reaping and singing, and dancing. So reaping and singing. So children, next question is your homework. You have to do on your own. Now let's come to the fill in the blanks. Behold her dash in the field. So behold her
single in the field. Alone she dash and dash the green. So alone she cuts and binds the green. So like this, children, complete the rest of the exercise. Now let's come to true and false. The girl is reaping and singing by herself. So is it true or false? So children, it's true. Now the girl sings a romantic song. No, the girl is singing a sad song. So this is false. Like this, complete the rest of the questions. Now let's come to the question and answers. Who is the poet of this poem? So William Wordsworth is the poet of this poem. Write it down. Next question is explain beholder from behold her to sound with reference to the context. So children, this you have to read the poem again and then answer this question. Now let's come to the next question. What was the girl doing when single in the field? So she was reaping the crops. She was reaping the crops. Next, which two words are compared to her song? So कौन से दो words हैं जिसे compare किया गया है? So first is nightingale and the second is cuckoo bird. So these are the two words. Now the next question is your homework. You have to do it on your own. So children, I hope that you have understood the poem and you have to read it again and learn it also and also complete the book exercise. If you have any queries related to it, you can ask me in the comments. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay elated.